आगामी असम विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इस बीच कल असम के शोणितपुर जिले के ढेकियाजुली में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 65 नंबर ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अशोक सिंघल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह ढेकियाजुली टी एस्टेट के खेल मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की तैयारियों के तहत आज शाम ढेकियाजुली के शहीद मैदान में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। আজি एक आवेगिक दिन। আজি पा ठीक 10 বছৰ আগত আজিৰ দিনতে 10 বছৰ আগত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছিলে তেতিয়া তেখেতৰ আগমন ঘটিছিল। এক নিৰ্বাচনী সভাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মই প্ৰাৰ্থী হৈ আছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত হোৱা নিৰ্বাচনত মই জয় লাভ কৰিলোঁ। তেখেতে আশীৰ্বাদ দি গৈছিলে। আজি এই স্মৃতিক আকত মনত আনি এই 10 বছৰীয়া যেটো তাক আমি আজি স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু অহাকালি তেখেত যে আকৌ ঢেকিয়াজুলিত পদাৰ্পণ হ'ব তেখেতক স্বাগতম জনায়ো আমি এই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰি আছোঁ। এক বিৰল কাৰ্যসূচী। এই চাকিৰ মাজত প্ৰদীপৰ মাজত তেখেতৰ মুখাটো যিটো আছে এই মুখাটো ফুলি উঠিব বুলি মানে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কৈছে। 10 মিনিট আছে, 10 মিনিট পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে সঁচাকৈ মুখাটো ওলাইছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীটো মই নাভাবোঁ যে দেশৰ কোনো স্থানত এই ধৰণে চাকিৰে মুখা কৰা কাৰ্যসূচীটো ক'ৰবাত হৈছে। কাইলৈ যিখন সভা হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখনত তেখেতৰ লগত আৰু কোন কোন